Hi student, how are you? Welcome to Pranabclasses. Today we are going to read lesson 6, The Longest Story. Free reading. Everyone of you like listening or reading stories. देखो समस्ते गप शुणा कि पढ़ा भल पाओ समस्ते भल पाती वास्तव में. Each story has a beginning, middle and an end. एवं प्रत्येक गपर गोटे आरंभ थाए मध्य थाए एवं शेष थाए. Have you ever heard or read a story which never ends? तुम्हें एमती गप के शुणीच कि जे गप जिते कहला पर भी सरू न. हियर इज ए स्टोरी फॉर यू, रीड एंड सी व्हेदर इट एंड्स और नॉट. तो आज कौन गोटे गप पढ़ा जहाँकि देखा शेष हो कि नहीं. टेक्स्ट को आस देख. वन्स देयर वाज ए किंग, द किंग हैड ए ब्यूटीफुल डॉटर. थोड़े गोटे राजा थिले, राजा गोटे सुंदर झील थिला. द किंग लव्ड टू टेल स्टोरीज. आ राजा कौन गप कहवाकू बा शुणाइबाकू भल पाउथिले. हिज डॉटर लव टू लिसन टू स्टोरीज. एवं तांको झील गप शुणिबाकू भल पाउथिले. द प्रिंसेस ग्रू अप लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम हर फादर. आ राजकुमारी कौन ना से गप शुणी शुणी सानरू बड़ होइछंती. वन डे द किंग डिक्लेयर्ड, वन हु कैन टेल द लॉन्गेस्ट स्टोरी लास्टिंग मोर देन 10 days विल मैरी माय डॉटर. तो राजा दिने कौन घोषणा कले ना वन हु कैन टेल द लॉन्गेस्ट स्टोरी, जड़े जी कि दीर्घ गप शुणाई पार लास्टिंग मोर देन 10 days विल मैरी माय डॉटर. आ से गप 10 दिन रु अधिका हो तो सी मो झील को बह कर. एंड इफ वन फेल ही विल बी माय सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. आदि से 10 दिन रु अधिक गप शुणाइवाई सक्षम हो पारा ना तो सी अवशिष्ट जीवन चाकर बा दास हो राजप्रसाद रे रहिबो. स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट केम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस टू टेल द लॉन्गेस्ट स्टोरी एंड मैरी द प्रिंसेस. तो तेणु कौन है ना जी गप कुआड़ी एक्सपर्ट माने थिले से माने सब दूर जगार आसिले आउ कौन गप शुणेबे एवं राजकुमारी को विवाह करने. फर्स्ट ए हैंडसम यंग मैन टोल्ड ए स्टोरी. प्रथम जड़े सुंदर युवक गप शुणेले. द स्टोरी लास्टेड फॉर 3 days and 3 nights. एवं तांको गप 3 दिन 3 राति गला. बट ऑन द 4th day द स्टोरी केम टू एन एंड. किंतु चतुर्थ दिन बेलू गप सरीगला. द यंग मैन वाज मेड द किंग सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. तो राजा शर्त अनुजाई 10 दिन रु अधिक गप शुणा पड़ार थिला. बट ये शुणई पारानी तो तांको अवशिष्ट जीवन तांको दास करी रखागला. Then came another young man from a distant country. तापर कौन है आउ जने युवक आछंती दूर देशरु. He told a story which lasted for 5 days and 5 nights. एवं तांको गप 5 दिन 5 राति गला. But on the 6th day the story came to an end. किंतु षष्ठ दिन बेलको गप शेष हो गला. The young man was made servant at the royal palace for the rest of his life. तो ये भी कौन राजा शर्त अनुजाई अवशिष्ट जीवन से राजप्रसाद रे दास ही कटेबे. नेक्स्ट अनदर यंग मैन ए रियल एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग. तापर कौन है आउ जने युवक आछंती जी के वास्तव में गप कहबारे एक्सपर्ट थिले. केम फ्रॉम अनदर कंट्री. ये भी अन्य एक देश रु आसतिले. ही टोल्ड ए स्टोरी व्हिच लास्टेड फॉर 6 days and 6 nights. तो ये गप शुणी आया गप कौन होता ना 6 दिन 6 राति जाइला. बट ऑन द 7th day द स्टोरी केम टू एन एंड. किंतु सप्तम दिन बेलू गप शेष हो गला. द यंग मैन बिकेम द किंग सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. एवं से युवक को मध्य तांको अवशिष्ट जीवन चाकर ही दास ही राजप्रसाद रे कटेबा को पड़ीथिला. किछि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन देछि डिस्कशन करिवा. Who are there in the story? The king, his lovely daughter, and the 3 young men came from far off places to tell the longest story are there in the story. 2 number question. Who loved to tell stories? The king loved to tell stories. Who loved to listen to stories? The king's daughter loved to listen to stories. What did the king declare? The king declared, if one who can tell the longest story lasting more than 10 days would marry his daughter. ना राजा यह घोषणा करथिले जे
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇବ ଯାହାକି 10 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଯିବ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫାର୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍? ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫାର୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ତ ଗପ କହିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ। ହୁ କେମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଟେଲ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି? ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ କେମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଟେଲ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି। ହାଉ ଲଙ୍ଗ ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲାଷ୍ଟ? His story lasted for 3 days and 3 nights. What happened to the young man? As his story came to an end on the 4th day, he was made the king's servant for the rest of his life. Who came next? Another young man from a distant country came next. How long did his story last? His story lasted for 5 days and 5 nights. 11. What happened to him? As his story came to an end on the 6th day, he was made servant at the royal place for the rest of his life. Question number 12. Who was the next storyteller? Another young man, a real expert in storytelling, was the next storyteller. 13. Where did he come from? He came from another country. Was he successful in telling an unending story? No, he was not successful in telling an unending story. What happened to him? He became the king's servant for the rest of his life. Do you think another storyteller would come and tell a story? Answer. Yes, I think that another storyteller would come to tell a story.